Hello friends, Namaskar dosto. Very warm welcome to Commodity Market Playbook of SD. Before I am going to holiday, this is a season where I stop trading and largely invest in myself, reading quality books and others. So these are one of my last few videos for the year. So let me, before I close the year, this has been a remarkable year for commodity trading. बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेंड मिला है थ्रू आउट द ईयर एंड आई थिंक 2025 विल बी इक्वली ऑसम. सो कमोडिटीज यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे अंडर एच डी रेनबो वेव वर्जन 1. आप लोग जानते हैं दिस इज द इंडिकेटर आई हैव क्रिएटेड एंड यूज पर्सनली फॉर माय ओन ट्रेडिंग. कुछ मेरे लर्नर्स भी हैं जो इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये वीडियोस बेसिकली आई एम मेकिंग फॉर देम एंड आल्सो एज ए वीडियो ब्लॉग मेरे लिए. So this is the situation of the commodities in the daily chart. Natural gas in the rising mode. जो क्लास किए हैं मेरे last time marathon and before, I've highlighted कि I'm going long in natural gas, but heading to the holiday season, I'm not in any plan to play this natural gas bull in 125 minutes chart. 125 मिनट के चार्ट पे मुझे बुल खेलने का कोई प्लान है नहीं इन द नेचुरल गैस. Largely, this is I'm playing with the ETF UNG because I'm sure there are a lot of resistance on the area. As these resistances are cleared up, more longer term trend actually I am placing the bets on. I think यूरोप में नेचुरल गैस प्राइस बढ़ने वाले हैं एंड उसका इम्पैक्ट यूएस में भी होने वाला है. सो नेचुरल गैस कल के क्लास में हम लोग हाईलाइट किए थे एक बुल स्प्रेड that one can go for the 300 to 310. उसके जरिए नेचुरल गैस में बेट किया जा सकता है एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ गुड बेट एंड एज नेचुरल गैस हैज गॉन अप. नाउ लेट्स कम डाउन टू इंडिविजुअली क्या मुझे लग रहा है एंड इंडिविजुअली व्हाट आर माय प्लान्स. करंटली आई हैव नो प्लान्स फॉर द बेस मेटल्स. I personally have zero trade in the way they have been ranging. I've gotten out of agriculture as a whole, like DBA. Yesterday was the signal that you get out. So I got out of the DBA. सारे के सारे agriculture is not moving, particularly coffee, cocoa. Few agriculture was driving. As they are turning, DBA has turned as well. So DBA has given me full exit. Now I'll wait for the right timely signal to enter the commodities again. जो ट्रेड मुझे अच्छा लग रहा था एंड आई वाज लार्जली फोकसिंग ऑन दैट वाज, वो बोला जाए तो ये हैज बीन वन साइडेड मूवमेंट, बट वो बोला जाए तो दैट हैज बीन गोल्ड. जिंक वी गॉट ऑलमोस्ट वन साइडेड मूवमेंट, बट गोल्ड इज आई हैव बीन मोर इंटरेस्टेड इन गोल्ड शॉर्ट एंड एज वेल एज सिल्वर शॉर्ट. गोल्ड एंड सिल्वर का शॉर्ट एंट्री वाज माय प्रेफर्ड एंड इसको वाया माय ETF आई एम होल्डिंग दिस. Gold is bearish and I think likely to fall even more bearish as we move forward. We had silver, solid move हुआ है silver में and I think further decline का possibility रह रहा है silver में. So gold, silver heading into this holiday season, I am planning to hold short into this in a risk managed way, but other commodities I am not much holding. क्रूड इज एज रेंजिश एज एवर. जो लोग मेरे वीडियो रेगुलरली देखते हैं आप जानते हैं मुझे रेंजिश मार्केट पसंद नहीं है एज अ ट्रेडर. सो आई प्रेफर द ट्रेंडिंग मार्केट एंड क्रूड इज इन अ वेरी वेरी टाइट रेंज. द रेंज कैन इंक्रीज इन फ्यूचर बट इट इज अ रेंज. सो रेंज गेम्स आई डोंट लाइक मच. मुझे डायरेक्शनल गेम्स ज्यादा पसंद है एंड नेचुरल गैस आई एम बुलिश. But in the holiday season, I'm not going to play the 125 minutes game. I'm holding this via the daily chart. And natural gas, I will prefer to remain bullish via the UNG. I'm trying to play the longer swing here. So overall, these are my commodity playbook. Largely, मैं mute ही रहूंगा regarding this holiday period. अबाउट जनवरी के बाद फिर से 125 एंड मोर शॉर्ट टर्म गेम खेलना चालू करेंगे. करंटली मोर लॉन्गर स्विंग विद द ETFs आई एम मोर इंटरेस्टेड इन, ताकि ट्रेंड भी हम लोग राइड करते रहे
रिस्क भी ज्यादा ना हो, हॉलीडे भी कर पाए, ताकि सारे के सारे डे कवर। उसका सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज मैनेज योर रिस्क. If you have long or shorted too much that you can't sleep, bring down the position to the sleeping point जहां पे, और holiday point जहां पे आप relax करके holiday कर पाओगे. Like for example, one stock Tesla, I've seen it is gone slightly bearish, but I've decided based on other parameters I'll hold Tesla. Some of the trades which you are more confident and risky, you feel more managed. Like one of the trade I'm in is the dollar long. So dollar long once again is not a short term position. It's a long. I think dollar is long, very much long, and dollar is will be breaking this 107, and it has actually broken. So dollar I think is going to go big. I have also gone in the position that I'll hold is interest rates long. I've gone long on interest rates as well. So interest rates clearly ऊपर की तरफ जा रहा है. So मेरा holding रहेगा towards interest rates long, dollar long, equity short, more with these ETFs, long term positioning, long term put. उसके जरिए overall market equity short and dollar long, interest rates long, some of the commodities short. So this will, and some of the individual stocks long. So overall, this is the current structure of my portfolio, that some commodities I'm short, gold, silver. Some commodities I'm long, like natural gas, individual counters. Some commodities like agriculture I've squared off. And equities, I remain short. And in the with the long-term positioning. And overall, I'm long on the dollar. That is my heading to the new year. That is my playbook. I'm long on the dollar, and as well as I'm long on the interest rates. Interest rates may be, I have taken long position. Means I'm long on the interest rate and short on the bonds. And we'll be closely watching the positions. These are ETF positions or not derivative positions. So I'm not very much worried about day-to-day movement. बट ओवरऑल थीम चेंज हो रहा है कि नहीं, उसके नजर रखना होगा. एंड स्पेशल इंटरेस्ट रेट व्हाट इज डूइंग विद दिस पर्टिकुलर 4.5 लेवल, उसके ऊपर मेरा नजर रहेगा. सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स रिगार्डिंग माय प्लेबुक. आई होप दिस डिस्कशन वाज हेल्पफुल टू यू. अगर हेल्प हुआ, डोंट फॉरगेट टू पुट अ थम्स अप. ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, एंड एज ऑलवेज हैप्पी ट्रेडिंग, हेडिंग टू हैप्पी न्यू ईयर एंड मेरी क्रिसमस.